So for a reaction, rate law and order are determined experimentally. We have discussed about it in our previous video. So this is a numerical. This is an exercise from your textbook, exercise number 4.11. Or this exercise, this numerical is related to determination of rate law and order for a reaction. So this is the general reaction for this question. A and B are the reactant and C and D are the products. So for this general reaction, we have to find out rate law and order. So to determine the order and rate law for this reaction, 4 different experiments are given in this question. In these 4 different experiments, different concentrations of A and B are given and rate of the reaction also given. When concentration in experiment 1, concentration of reactant 0.1 and concentration of reactant B is 0.1 moles per liter, then initial rate of formation of D is how many? 6 into 10 to the power minus 3. Similarly, in this 4 different experiments, different concentrations of A and B are given and different rate also given. So from this data, we have to calculate rate law. For this reaction, we have to calculate rate law and we have to determine the value of rate constant for this reaction. जब हम लोग ये reaction का rate law determine कर पाएगा, so from the rate law of this reaction, we can mention the order for this reaction. We can mention the order with respect to reactant A and B for this reaction. So ये reaction का हम लोग रेट लॉ डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन है इनके लिए हम लोग एक जनरल रेट एक्सप्रेशन कंसीडर करना पड़ेगा. सो लेट अस consider rate law or rate expression for this reaction is rate equal to K into concentration of reactant A into concentration of reactant B. Let us consider exponent of the reactant A is X and exponent of the reactant B is Y. So let us consider X and Y. X is the order for this reaction with respect to A, reactant A, and Y is the order for this reaction with respect to the reactant B. So how many overall order of this reaction? X plus Y. So we have to calculate the value of X and Y for this rate expression. So X and Y value find out करने के लिए then हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 4 different experiment का help लेना पड़ेगा. So now from experiment 1, in the experiment 1, how many rate is given? Rate is, in experiment 1, rate is how many? 6 into 10 to the power minus 3 equal to K into concentration of A is given in the experiment 1, how many? 0.1, and concentration of B also 0.1. So concentration of A equal to 0.1 to the power X, concentration of B 0.1 to the power Y. Let us consider this is equation number 1. That means हम लोग ये जो rate expression है जिनको हम लोग consider किया, ये rate expression को हम लोग apply किया for the experiment 1. Similarly experiment 2 के लिए हम लोग rate expression को apply करने से for the experiment 2. In the experiment 2, how many rate is given? Rate is 7.2 into 10 to the power minus 2 equal to K into concentration of A is given 0.3 to the power X, concentration of B is 0.2 to the power Y. Let us consider this is equation number 2. Similarly experiment 3 apply करने से then in experiment number 3 to how many rate 2.88 into 10 to the power minus 1 equal to K into concentration of A is given in the experiment 3 0.3 to the power X
and concentration of B is given 0.4 to the power y. This is the, let us consider this is equation number 3. Similarly हम लोग experiment number 4 apply करने से in experiment number 4 how many rate is given 2.4 into 10 to the power minus 1 k into concentration of A is 0.4 to the power x and concentration of B is 0.1 to the power y. Let us consider this is equation number 4. So अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 4 इक्वेशन को यूज करके हम लोग x एंड y का वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू देखो अभी हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड कर देने से देन y कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन x का वैल्यू मिल जाएगा. सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करने से सो इक्वेशन 1 में रेट है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इक्वेशन 4 में रेट है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, k इंटू कंसेंट्रेशन 0.1 टू द पावर x, 0.1 to the power y, and k into concentration of 0.4 to the power x into 0.1 to the power y. So ये दोनों क्या हो गया, cancelled. Then k also cancelled. So अभी हम लोग sorry, this is equal to 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2, so this is 10 to the power minus 2. So 6 into 10 to the power minus 3, so decimal point को हम लोग इसको 24 बना देने से then it becomes 10 to the power minus 3, 0.1 to the power x, 0.4 to the power x, that means 1 by 4 to the power x we can write. So 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3 cancel, 6 by 24, that means 6 by 24 equal to 1 by 4 equal to 1 by 4 to the power x. So ये जो 1 by 4 इसका पावर एक्सपोनेंट कितना है 1 by 4 to the power x. So बेस दोनों का सेम है, then power equal, therefore we have x equal to how many 1. तो x का वैल्यू कितना निकला 1 निकला. सो अभी हम लोग क्या करना है, y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ट्राई करना है. सो अभी हम लोग y का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करने से इक्वेशन 2 में रेट 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड इक्वेशन 3 में रेट है 2.88 इंटू 10 टू द पावर minus 1, then k into 0.3 to the power x, 0.2 to the power y, k into 0.3 to the power x into 0.4 to the power y. So now this 7.2 into 10 to the power minus 2, so ये 2.88 को 28.8 बना देने से ये एक्सपोनेंट बिकम्स मोर नेगेटिव 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा. सो ये दोनों कैंसिल हो गया, के कैंसिल, के ऑल्सो कैंसिल. सो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.4 टू द पावर y वी कैन राइट. सो ये दोनों नंबर का डेसिमल पॉइंट का पीछे में 1 डिजिट है, सो डेसिमल पॉइंट कैंसिल्ड. सो दिस इज अबाउट 72 डिवाइडेड बाई 288, और ये दोनों एक्सपोनेंट कैंसिल. Then this is 2 by 4, 2 by 4 means 1 by 2 to the power y. So this is equal to 1 by 4 and 1 by 2 to the power y. 1 by 4 we can write 1 by 2 to the power 2 equal to 1 by 2 to the power y. Then base same, power equal, therefore y equal to how many 2. So हम लोगों को x का वैल्यू कितना मिला 1 मिला, y का वैल्यू कितना मिला 2. therefore rate law is rate equal to k into concentration of reactant A
टू दी पावर एक्स का वैल्यू कितना मिला हम लोगों को 1 मिला, 1 को नहीं लिखने से भी होगा। कंसेंट्रेशन ऑफ बी का एक्सपोनेंट कितना मिला 2 मिला। सो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर दैट general reaction. Now order of this reaction with respect to a equal to how many 1, क्योंकि according to rate expression a का exponent कितना है 1 है, therefore order of this reaction with respect to a is 1 and order of this reaction with respect to b equal to how many 2. Then how many overall order for this reaction 1 plus 2 equal to 3. That means it is a third order reaction. Now we have to calculate the value of rate constant k. Calculation of rate constant k का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो रेट कांस्टेंट k का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक एक्सपेरिमेंट का हेल्प ले सकता है, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट। So in the experiment number 1, rate equal to 6 into 10 to the power minus 3 and k into concentration of the reactant A, सॉरी, अभी हम लोग ये रिएक्शन के लिए के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो हम लोग का रेट एक्सप्रेशन मिला है, रेट एक्सप्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। सो आवर रेट एक्सप्रेशन इज रेट इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी टू द पावर 2। देन के वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो के इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय concentration of A into concentration of B to the power 2 in the। सो अभी हम लोग किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को, एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3 और 4, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट को अप्लाई कर देना से यहाँ सपोज हम लोग एक्सपेरिमेंट 1 को अप्लाई कर रहा है। एक्सपेरिमेंट 1 में रेट कितना दिया है? इन एक्सपेरिमेंट 1 रेट इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 टू द पावर moles per liter per minute unit is, and concentration of A is given in experiment 1 0.1 moles per liter and concentration of B is given 0.1 moles per liter to the power 2. So 1 moles per liter ऊपर ने से कैंसिल हो जाएगा। then 0.1 6 into 10 to the power minus 3 per minute, then 0.1 दो मल्टीप्लाई करने से 0.01 होगा। इसके साथ और एक 0.1 मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा 0.001। सो 0.001 मोल स्क्वायर liter to the power minus 2. Then 0.001 that means this is equal to 10 to the power minus 3. So ऊपर में से 10 to the power minus 3 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली रह गया 6 और यूनिट क्या रह गया लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर मिनट। और दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन।